Okay, let's start, guys. Our today's topic is cost of capital. So let's quickly revise the cost of capital. Then we will solve few question of cost of capital. Okay, I'm just explaining the basics of all cost of capital. So let's discuss the basics of all cost of capital. Let's start from cost of equity. There are two methods to calculate the cost of equity. First one is dividend valuation model. In dividend valuation model, there are two models. If there is a constant dividend, the formula to calculate cost of equity is dividend divided by X market value. Market value should be X market value. Dividend divided by X market value, obviously into 100 is equal to cost of equity. So in exam, if dividend is given, if X market value is given, no growth is given, then you can apply this formula. This is no growth model. And in case if growth is given, dividend with constant growth, then the formula is KE is equal to D naught into 1 plus G divided by X market value plus G. So what is D naught? D naught is current dividend. इस साल का जो dividend होगा, current dividend. And if we add growth of 1 year into D naught, that will become D1. D1 कहते हैं next year के dividend को. D1 कहते हैं जी next year dividend. Next year dividend. This will be next year dividend. So in exam, if only D1 is given, then cost of equity formula will be D1, this whole numerator will be replaced. D1 divided by X market value plus G. So the question is, growth कैसे calculate करनी है? How to calculate the growth? So there are two methods to calculate the growth. Two methods to calculate growth. Number one method is historical method. Historical method. So what we do in historical method, take the latest dividend in the numerator. Latest dividend in the numerator. And use the earliest dividend, oldest dividend in the denominator. Raised to power 1 over n minus 1. Remember this, n is number of years except base year. N is number of years except base year. So actually this is number of jumps. आपको याद आ जाएगा, you will remember number of jumps. So if there are like these are the years, and dividend is like 2, 2.2, 2.7, 2.9, 3.2. So the latest dividend, this is the latest dividend. This is the earliest dividend. How many years? You will not count the base year. This is 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. Number of n is 4. So this is the historical method to calculate the growth. Okay. There is another method to calculate growth, that is Gordon growth model. Gordon growth model. Formula is, by the way, very simple. That is G is equal to B into R. Formula बहुत आसान है. B into R.
अच्छा, बी होता क्या है? व्हाट इज बी, व्हाट इज आर? बी है जी रिटेंशन रेशियो. Retention ratio. How much you will retain, that is retention ratio. So there are different explanation of retention ratio. One minus dividend payout ratio. If you are paying 30% dividend, that means you are retaining 70%. 1 minus dividend per share divided by earning per share. 1 minus dividend divided by profit. Profit available to ordinary shareholders. So retention ratio is if you have paid the dividend, how much you have saved, how much you have retained. अगर तुमने dividend दे दिया है तो बचाया कितना है, how much you have saved, that is the retention ratio. So remember, profit means profit available to ordinary shareholders. Profit available to ordinary shareholders. R क्या है? What is R? R is return on equity. Return on equity. R क्या है जी? Return on equity. Profit available to ordinary shareholders divided by book value of equity. Divided by book value of equity. इसका एक और वर्जन भी बन सकता है. There could be another version. Profit after tax is earning per share divided by net asset value per share. Net asset value per share. Remember, what is EPS? Profit available to ordinary shareholders divided by number of shares. What is net asset? Equity is net asset. And what is net asset per share? If you divide the equity, book value of equity divided by the number of shares, that will be net asset value per share. So guys, if you have the R, if you have the B, you will multiply B into R, that will be the growth. So growth formula is B into R. What is the logic behind this? B का मतलब है retain कितना करते हो, how much you retain. R का मतलब है at which rate you are going to invest. B is how much you retain. R is at which rate you are going to invest. So how comes the growth? B, you will retain something. R, you will invest that retention amount in the market. So if you retain and invest, here's comes the growth, you can earn the growth. If you retain and invest, you earn the growth. Okay. So the cost of equity has two formulas. Let's discuss the cost of capital. Cost of capital, cost of debt. So if there is a irredeemable debt in exam, remember its formula will be KD is equal to interest rate, interest amount into 1 minus T divided by X market value. Market value will always be X. So in irredeemable debt, agar irredeemable debt aa gaya, so you will take interest into 1 minus T divided by X market value. That is irredeemable debt. What about the redeemable debt? Redeemable debt KD will always be calculated through IRR. So for example, if it is a 5-year debt, so what you will do, put the market value as a negative number, write the interest into 1 minus T, redemption value, first discounting at 5%,
Second, discounting at other rate. And calculate the IRR. That IRR will be equal to the KD. Remember few points. जब भी आपने IRR कैलकुलेट करना है, KD कैलकुलेट करना है, put the market value as a negative number. Take the after-tax value of interest. Then calculate the, then write the redemption value. First discounting at 5%, answer. Second discounting at another rate, and then calculate the KD. So let me explain with the help of an example. सर इसमें भी हम IRR का फॉर्मूला लगा. Example is par 100, coupon, for example, 10%, redeemable at 5th year at par, market value, for example, 110, X is example 30%. So traditionally, how to calculate this? Let's say 5 years, 0, 1 to 5 and 5. Cash flows, put the market value as a negative number. Put the market value as a negative market value ko negative number rakh le. Coupon is an interest rate, take its after tax value, that is 7. 10% of 110, then take its after tax value 7. Redemption value 100. First discounting 5%. Answer. Second discounting other rate. Answer. Calculate IRR. That IRR will be equal to the KD. But thank God we have an Excel now in ACCA. So what is the best way to solve this? Simply write years 0, 1, 2, 3, 4, 5. Write the cash flows here. Market value 110. Interest rate 7, 7, 7, 7. And in last year it will be 7 plus 100. Par value भी मिलेगी, interest भी मिलेगा. ठीक है? We can write this 107. Simply command, give the command IRR, bracket start, select all cells from 0 to 5th year. So that will be equal to the KD. Guys, give me 1 minute. Let me open the Excel file. Okay, there is a question that whenever you want to calculate the market value, always take before tax discount rate, before tax discount rate. Market value में tax नहीं लेते. And whenever you want to calculate the KD, always take after tax interest. That's the rule. Okay, let's suppose this is the example. First of all, write years 0, 1, 2, 3, 4, 5. First of all, write the cash flows. Negative 110, 7, 7, 7, 7, and 107. Now calculate KD. KD is equal to, give the command of IRR, bracket start. KD is, it is equal to 4.71%. So that's how to calculate the KD. Okay.
ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक्सेल पे है, मैन्युअली आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप एसीसी के अलावा कोई और पेपर दे रहे हैं तो आपको पूरा करना पड़ेगा नॉर्मल तरीके से। जिस टाइम ये किया हमने, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन गाइस? Shall we move? क्या एक्सप्लेन करना है? डिस्काउंट फैक्टर, ये केडी की बात कर रहे हैं आप? किसमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन क्या है वो बताएं जरा। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। इन कैलकुलेशन ऑफ केडी always take after tax interest, this interest, always take after tax interest and calculate IRR. But in calculation of market value, always take before tax interest. Never consider tax in calculation of market value. That's the point. You have to remember this. Take after tax interest in calculation of KD. Take before tax interest in calculation of market value. ठीक है? Perfect. Now let's move further. अच्छा जी, अगर एग्जाम में आ गया वेरिएबल रेट डेट, बैंक लोन, या फिर if bond is trading at par and redeemable at par. So in all three cases, case number 1, case number 2, case number 3, formula is simple. KD is equal to interest rate into 1 minus T. Interest rate into 1 minus T. We will take the after tax value of interest. Interest rate into 1 minus T. Okay. And if there is a convertible debt, how to calculate KD of convertible debt? It's very simple. Same formula. So let me write the traditional way. Traditional or manual way. We will write the years. For example, 5 years. Cash flows. Put the market value as a negative number. Take the after tax interest. Or in last year, you will take higher of redemption and conversion. Redemption value or conversion value, we have to take the higher value. Higher of. First discounting at 5%. Second discounting at other rate. You will calculate the IRR and IRR will be equal to the KD.
What is the difference in this method and the previous method? Both methods are same except one thing, that is in last year either you will take redemption value or conversion value. So what is redemption value? What is redemption value? Either bond will be redeemed at par, either bond will be redeemed at premium. Par से थोड़ा ऊपर मिल जाएगा, like 5% premium means 105, 6% premium means 106. Either bond will be redeemed at discount. 2% discount means you will get 98. So what is conversion value? Conversion value का मतलब क्या है? In convertible bonds, bondholder have the choice to convert their bonds into ordinary shares. Convertible bond में bondholder के पास choice है, either they can redeem the bond or they can convert the bond into predetermined number of ordinary shares. उनके पास choice है, they can convert the bond into predetermined number of ordinary shares. So the formula is, conversion value formula is number of shares. मैं आपको इतने number of shares दे दूंगा. Your bond will be converted into this number of shares after 5 years. So, but you do not have market value after 5 years. You have a market value now. Current market value of share. So what you will do, you will increase the market value with the estimated growth and how much market value will increase every year. Growth दी होगी, उस growth से तुम हर साल market value निकालोगे, हर साल market value को बढ़ाओगे. So what is n? Number of years in conversion. Number of years in conversion. Number of shares will be given. आज की market value, current market value will be given. Growth will be given. Sir, ये growth क्या है? Dividend की growth? No. It's the growth in share price. Growth in share price. Number of years will be given. So you will multiply number of shares into current market value of share into 1 plus g raised to power n conversion value. You can calculate the conversion value. And in last year, either you have to take the redemption value or the conversion value. In last year, either you will take the redemption value or conversion value. So the तरीका क्या है? Simply put market value as a negative number. Simply write after tax value of interest and then take the higher of redemption or conversion. IRR calculate करें, आंसर आ जाएगा. Excel पे कैसे करेंगे? Right. Year 0, 1, 2, 3, 4, 5. Market value negative. Interest 1 minus T. Interest 1 minus T. Interest 1 minus T. Interest 1 minus T. And in last year, interest तो मिलेगा after tax plus either redemption or conversion. Calculate the IRR. Select all cells. That's how you will calculate the KD. इस तरह से आप KD निकालेंगे. Okay. Next is preference share. Irredeemable preference share.
Formula is cost of preference share is equal to preference dividend divided by X market. Always take X market value. Simple. Never deduct tax in calculation of cost of preference share. Never deduct tax in calculation of preference share. Redeemable preference share. Calculate IRR of data विदाउट टैक्स लेना है. या किस तरह से डेटा होगा? ट्रेडिशनल वे में उसी तरह होगा. 0, 1 to 5 and 5 cash flows, market value, simple preference here. Do not, simple preference dividend. Do not deduct the tax. Redemption value. The rate. Okay. IRR. On Excel, for example, it has a life of 5 years. So how to calculate? Market value, preference dividend, dividend. In last year, dividend plus preference redemption value. IRR, select all cells. Simple. That's how you will calculate. And then you will calculate the WACC. WACC. In WACC, first of all, calculate the market values of all sources. Equity, debt, preference share. First of all, calculate the market value. How to calculate the market value of equity? Calculate number of shares by dividing share capital over par value into market value per share into market value per share. Debt, book value of debt divided by par value into market value per bond. Preference share, book value of preference share divided by par value into market value per preference share. So calculate the market values, write the cost, and then take the average value. Multiply, calculate the average value and calculate back. For example, market value is 1000, market value is 700, market value is 300, total is 2000. And cost of equity is, for example, 10%. Cost of debt is, let's say, 5% after tax. Cost of preference share is, let's say, 7%. So multiply these two columns. 100, 35, 21, 156. Now WACC is 156 divided by 2000. That is 7.8%. That's how you will calculate the WACC. इस तरह से आपने WACC निकालना है. Simple. It's very simple chapter. Okay. Any question, guys, till now? Okay, the requirement is calculate the after-tax weighted average cost of capital of company on a market value basis.
Following information has been taken from the statement of financial position. Non-current assets, current asset, cash, equity, ordinary shares, reserves are given. 6% preference shares are given. 6% preference shares are given. 8% bank loan notes are given, and then bank loan is given. Okay, company have a nominal value of $1 per share. Current ex-dividend market price is 6.1. Dividend of 0.9 per share has just been paid. 6% preference share have a nominal value of 0.75, and ex-dividend market price of 0.64 per share is given. Then 8% loan notes of company have a nominal value of $100 and market price of 103.5. Annual interest has just been paid and the loan notes are redeemable in 5 years' time at a 10% premium. Bank loan has a variable interest rate. Risk-free rate is 3.5. Equity risk premium is 6.8%. Company has an equity beta of 1.25%. And corporate tax rate is 20%. Okay, let's solve this question. So first of all, calculate the cost of equity. Part A. First of all, solve cost of equity. सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, वरना आप सबको पता है फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला इज रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा into RM minus RF or into equity risk premium. This is the formula, cost of equity. So let's write the risk-free rate. That is 3.5%. Let's write the beta. That is 1.25. Equity risk premium. That is 6.8%. So cost of equity is risk-free rate plus beta into equity risk premium. आप इसको मैन्युअली भी करके देख सकते हैं. Risk free rate plus beta into equity risk premium. So cost of equity is 12%. How to calculate cost of debt? Cost of loan notes. तो अगर हम गौर से देखें, loan notes is a redeemable loan. 8% loan notes have a nominal value of $100 and market price of 103. Annual interest has just been paid and loan notes are redeemable in 5 years time. तो किस तरह से करेंगे जी? Make 5-year performer. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Right, cash flows. First of all, write the market value as a negative number, 103.50. Then write the interest. Tax rate is 20% and interest is 8. Take the after tax value. 8 into 0.8, 64, 6.4. Copy into the all cells. And last year bond is redeemable at 10% premium. So इसमें add कर दें plus 110. Now calculate the KD. KD is very simple. Simply write the IRR. Bracket start. Select all values. IRR is 7%. It is 7.27%. That's how you will calculate the IRR. अगर आपने traditionally करना होता, तो how would you do?
Here 0, 1 to 5, 5 cash flows. Market value into negative number. 8% को after tax कर लें 6.4 and write the redemption value in the last year that is at premium. First discounting at 5%. Second discounting at other rate. Take the IRR and that IRR must be equal to 7.27%. ये ऐसे करीब करीब आएगा इस तरह से करना था. Okay, next is cost of bank loan. Cost of okay. Bank loan interest is 8%. Take the after tax value of 8%. Sorry, bank loan interest rate is not given. Bank loan interest rate is not given. Okay, if bank loan interest rate is not given, तो हम अज्यूम करेंगे जो लोन नोट्स का रिटर्न है, जो लोन नोट्स का केडी है वही बैंक लोन का केडी है, क्योंकि बैंक लोन का इंटरेस्ट वेरी करता है. लिखा हुआ है ना सबसे एंड पे, बैंक लोन हैज अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट. That means we will write it is assume that bank loan KD will be equal to KD of loan notes. $7.27%. ये assumption लेंगे. तो अगर if any time KD of bank loan is not given, you can take the assumption that it is equal to the KD of other loan. ये आपकी assumption है, assumption लीजिए आप. फिर क्या reality में भी ऐसा होता है? हाँ, करीब करीब हो सकता है. क्यों दोनों आपके डेट है तो required return of investor दोनों में सेम होगा. आपको कॉस्ट ऑलमोस्ट दोनों में सेम पड़ रही है. दानिश, you were asking something. सर मैं कह रहा हूँ कि ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होती है assumption. जी जी, हर क्वेश्चन में अगर इंटरेस्टेड नहीं दिया है तो जबरदस्ती नहीं करनी. दिया तो फिर वही यूज करना ना. If data is not given, then you will take the assumption. 6% preference share. So dividend is 6%. Nominal value is 0.75. Market value is 0.64. So remember, preference dividend. That is equal to 6% of 0.75. Market value 0.64. So cost of preference share is preference dividend over market value. $7.03. Interest, how do you find the interest of 6.4? 8% को आफ्टर टैक्स कर लेना आप. %8 loan notes, 8% is the interest rate of loan notes. Take its after tax value. Tax rate is 20%. 8 into 0.8. ठीक है. जी वो 1 - T होता है ना सर फॉर्मूला, तो 1 - T होता है. 0.8 आ रहा है ना. उसका 0.2 लेके माइनस कर लेना. Okay, now calculate the market values. Right, equity, loan notes, bank loan, preference share. First of all, write the market values. So let's calculate the equity number of shares. Equity
Book value is 15 million divided by par value, that is $1. And market value is 6.1. 6.1. $15 divided by 1 into 6.1. Loan notes. Loan notes book value is 8 million. 8 million. Par value is 100 and market value is 103.50. 8 million divided by 100 into 103.5. Bank loan book value, market value will be same, 5 million, 5 million. Preference share book value is 6 million divided by par value, that is 0.75 into market value. 6 divided by 0.75 into 0.64. Now write the cost. Cost of equity is 12%. Copy it. Loan note cost is 7.27%. Bank loan cost is 7.27. KP is 7.03. Now multiply cost with the market value. Okay, take the sum of all these. So WACC is equal to 11.2%. That's how you will calculate. 11.2%. To calculate the after-tax weighted average cost of capital of Tufa company on a market value basis. Question is, following statement of financial position relates to a company listed on a stock exchange. Corporate tax is 30%, share capital is given, retained earnings is given, long-term borrowing is given. Share capital of Tufa company consists of 12 million of ordinary shares and 5 million of irredeemable preference shares. Ordinary shares of Tufa company have a nominal value of 0.5. Okay, ex-dividend market price is 7.07 and cumulative dividend market value is 7.52. So the difference between cumulative dividend market value and ex-market value is current dividend. And dividend of 20x7 will be paid in near future and the previous dividends are given. 5% preference share of company have a nominal value of 0.5 and ex-dividend market price is 0.31. Long-term borrowing of Tufa company consists of $10 million of loan notes and $3 million of bank loan. Bank loan is a variable interest. I think it looks like a similar way of testing. 7% loan notes have a nominal value of $100 per loan notes and a market price of 102.34. Annual interest rate has just been paid and loan notes are redeemable in 4 years' time at a 5% premium to the nominal value. So let's calculate it. मैं यहीं पर ही कर रहा हूं. First of all, let's calculate the cost of equity. So we will be calculating this using the different valuation model. So cost of equity is equal to D naught into 1 plus G. आपको फॉर्मूला नहीं लिखना एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूं. Just writing the formula for a reference purpose. Divide by market value plus G. So what is D naught? D naught is equal to 7.52 minus 7.07. 0.45 is dividend per share.
X market value will be equal to 7.07. Okay, latest dividend is 0.45. Earliest dividend is 0.37. So let's calculate the number of jumps. सर ये जो इसने 1, दिया हुआ है 2, 3, 26 का 0.43, ये नहीं होंगे हम लेटेस्ट डिविडेंड? नहीं भाई, 20x7 है लेटेस्ट ईयर, वो 20x6 है. That is 20x6. Latest is 20x7. ठीक है, लेटेस्ट ईयर x6 लेटेस्ट होगा, x7 लेटेस्ट होगा, पहले ये बताओ. X7. एक्सीलेंट. तो कितने इयर्स बनते हैं? कितने इयर्स बनते हैं? कितने इयर्स हैं? नंबर ऑफ जंप्स कितने हैं? ट्वेंटी x7 से अगर लेंगे तो फिर 4 बनेंगे, अगर 6 से लेंगे तो फिर 3। भाई सिंपल, मैंने इफ नहीं पूछा आपसे, अगर नहीं पूछा, बताओ नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं बस. एक एक बताओ नंबर ऑफ इयर्स कितने, दैट्स इट. एक तो इफ तो मैंने पूछा ही नहीं. 4 ही हैं. जब 20x7 ले लिया तो 4 ही हैं. ठीक है, तो रेज टू पावर 1/4 ना, 1/4. ओके, नाउ -1, होल ब्रैकेट -1, होल ब्रैकेट -1. So growth is 5.02%. So let's calculate the KE D naught into 1 plus Z divided by market value plus G. 11.69, 11.70. Please confirm, guys. Done? Okay, let's move to next. Cost of loan notes. कितने साल है जी? How many years are there loan notes? 5 years. अगर हम मैनुअल कर रहे होते तो हम इसका टिपिकल IRR वाले तरीके से करते हैं, लेकिन अभी एक्सेल है तो इससे करेंगे. राइट द कैश फ्लोज गाइस. In year 0, put the market value as a negative number, 102.34, and then take the after tax value of the interest, 7% into 1 minus t, 0.7. And in last year, redemption value is 105, 5% premium to the par, 105. So KD will be equal to IRR
सर इसने 4 इयर्स लिखा हुआ है कि 4 इयर्स में रिडीम होगा 5। अच्छा ठीक है, हाँ 4 years guys. Four years. ठीक है. So KD will be equal to IRR. Select all cash flows. 5.39%. Tax is 30%. It is given in the question. Tax is 30%. It is written at the top. Tax is 30%. Okay. What about the bank loan? Bank loan का interest दिया हुआ है? Is any data of bank loan is given? No. तो assume करेंगे वो same ही होगा. Cost of bank loan will be same as cost of loan notes. सर ये हमने लाइन ये एग्जाम में भी लिखनी होती है? Yes, लिखनी होती है. यारिश कैसी बातें कर रहा है तू आज, मतलब ना वैकी वैकी बातें कर रहा है. जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब एग्जाम में लिखनी. मैं बोल रहा हूँ लेटेस्ट ईयर 20x7 है, तुम कह रहे हो सर अगर 20x6 हुआ तो ये होगा. मुझे लगता है दफ्तर का असर है थोड़ा सा. सर वो इधर उधर का भी ध्यान रखना पड़ता है ना जरा थोड़ा सा. चलो कोई मसला नहीं यार, इट्स ओके. पेपर पास हो गया ना तो ये सारे गम इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे तेरे. अच्छा जी, प्रेफरेंस इंशाल्लाह. डिविडेंड देखें कितना है? 5% है. ये बहुत बड़ा धोखा है. 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ $0.5. प्रेफरेंस डिविडेंड, इसके डिविडेंड 0.5 is the par value into 5%. 0.025. And market value is 0.31. So KP is preference dividend over market value. ठीक है जी. Now write the market values. First of all, equity, loan notes, bank loan, preference shares. अच्छा, equity की book value कितनी है? 12 million. And it has a par value of 0.5. And market value is 7.07. 12 million is the book value, 0.5 is the par value. 12 million divided by 0.5 million into 7.07. Into 7.07. Loan notes. Loan notes की book value 10 million. It has a book value of 10 million. Divide by par value 100 into market value 102.34. 102.34. Bank loan book value, market value will be same, 3 million. Preference share has a book value of 5 million. 5 million. And nominal value is 0.5 into market value 0.31. Take the sum of all these, then write the cost. Cost of equity select कर लें. 11.7. KD is 5.39. 5.39. 8.06 multiply कर दें. By the way, manually भी exactly इसी तरह ही करते हैं.
11.19%. 11.19%. प्लीज देख लें इसको एक दफा. Any question, guys? Risk adjusted WACC. Okay. यहाँ पे क्या होगा? What will happen? What we need to do here. कुछ बेसिक बातें आपको आइडिया होने चाहिए. एक सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? What is systematic risk? It is that kind of a risk which you cannot diversify away. Then there is unsystematic risk, which can be diversified away. Can be diversified away. Cannot be diversified away. ये आपको आइडिया होना चाहिए. फिर you should have a knowledge of business risk and financial risk. You should have a knowledge of business risk and financial risk. Okay, next is you should have a knowledge of beta asset that only includes business risk. Then you should have a knowledge of beta equity that includes the business risk as well as financial risk. Guys, you should have a knowledge of business risk and financial risk. So the beta which is only having a business risk is called beta asset. और वो beta जिसमें दोनों risk शामिल हो, that beta is called beta equity. Beta equity includes the business risk and the financial risk. So beta asset is equal to beta equity into market value of equity divided by equity plus debt into 1 minus t. और अगर beta debt हुआ, if there is any beta debt, so formula will be debt into 1 minus t divided by equity plus debt into 1 minus t. So normally we assume that beta debt will be 0. So we always use this term. Beta asset is equal to beta equity into equity divided by equity plus debt. Always take market value of equity. E stand for market value of equity. D stand for market value of debt. Okay. If you want to use the existing WACC, so there are two conditions if you want to use the existing WACC. Mainly, वैसे 4 conditions, there are 4 conditions, but main conditions are 2. You can use existing WACC to appraise new project if following conditions are fulfilled. If following conditions are fulfilled. अच्छा जी, क्या conditions हैं? पहली condition, business risk of new project should be same as the business risk of existing project. As the business risk of existing project.
सिंपल टर्म में नेचर ऑफ द बिजनेस शुड रिमेन सेम. Nature of business should remain same. If nature of business is same, you can use the existing WACC. Second, gearing, financial structure of the existing business and the new business should be same. Financial risk or gearing of new project should be same as the existing financial risk and gearing. So दो बातें, you can use the existing WACC if the business risk of the new project and if the financial risk of the new project is same like the existing business. पुराने वाले बिजनेस का बिजनेस रिस्क और पुराने वाले बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क वही होगा जो नए वाले का होगा, तो आप पुराने वाला WACC यूज कर सकते हैं. You can use the existing WACC if the business risk of the new project and the financial risk of the new project are same. ठीक है. तो अगर डिफरेंट हो गया तो हम यूज करेंगे रिस्क एडजस्टेड WACC. तो रिस्क एडजस्टेड WACC क्या है? Business risk of new project is different. Financial risk of new project is same like the existing financial risk. So business risk नए वाले प्रोजेक्ट का डिफरेंट है, financial risk is same. Business risk of the new project is different, but the financial risk is same. Then you can use the risk adjusted WACC. So what are the steps? Number one step, as your business risk is different, so आप एक प्रॉक्सी कंपनी ढूंढेंगे क्वेश्चन में. Identify a suitable proxy company. Identify a suitable proxy company and ungear its beta equity into beta asset. You will search a proxy company. By the way, it is very easy in a given question because every other company which is given in the question will be a proxy company. So you will ungear that company and calculate the beta asset. और अगर एक से ज्यादा proxy company given हुई, you will ungear both of the proxy companies and take the average of that beta. Okay, if two proxy companies are given, you will ungear the both proxy company and take the average of beta. Identify a suitable proxy company and ungear its beta equity into beta asset. Regear the beta asset using on gearing. अपनी gearing से उसको regear कर लो and calculate beta equity. Calculate cost of equity using CAPM. Then last, calculate WACC. So steps are simple. अपना beta use नहीं करना. If your nature of business is changing,
You will search a proxy company. You will calculate a beta asset of that proxy company. Then you will add your own gearing and calculate beta equity and put that beta equity into the CAPM, calculate cost of equity, or फिर cost of equity से WACC निकालो. Then you will calculate the WACC. That's how it will work. Risk adjusted WACC. Okay. Okay, let's discuss the business valuation. सर वो के ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा Let's discuss the valuation of equity. First method is dividend valuation model. Market value is equal to D naught into 1 plus G divided by cost of equity minus G. It's a simple approach. This you will use this formula if single growth is given. If single growth is given. In case of multiple growth, what you will do? In case of multi growth, examiner will give you few years. So for example, in year 1, you will calculate the dividend. For example, in year 2, you will calculate the dividend. For example, in year 3, you will calculate the dividend. और फिर चौथे साल से onwards, from year 4 onwards, cash flows will achieve a constant growth. D3 into 1 plus G divided by cost of equity minus G. So first few years of dividend will be given. Then after first few years, cash flows will achieve a constant growth. And then you will discount all these cash flows at a given cost of equity. At a given cost of equity. For example, if it is 10%, तो इसका discount rate होगा 1.1 raised to power minus 1, 1.1 raised to power minus 2, 1.1 raised to power minus 3. And whenever you apply this formula, this is a formula of perpetuity with growth. इसको भी आप multiply करेंगे with a discount factor of last year. With a discount factor of last year. Okay, with a discount factor of last year. With a discount factor of last year. So for example, it will be given in the question that current dividend is
$10 and it will increase by 10% for next 3 years, and then it will achieve a constant growth of 4% for the foreseeable future. Cost of equity is 12%. Calculate market value. So what you will do? You will calculate the dividend of next 3 years. $10 is the current dividend. It will increase by 10% for every next 3 years. 11, 12.1, 13.31. And from year 4 onwards, it will achieve a constant growth. You will take the last dividend into 1.04 divide by cost of equity minus G, and discount all these cash flows at 12%. And for this, whenever you apply this formula, you have to multiply with the discount factor of last year. Market value will be, calculate, can you please calculate, guys. What is the answer? Anyone? $137.89. Perfect. Next method is net asset method. You will calculate net asset is equal to total assets minus total liabilities minus preference share value, if any. So when you are calculating the total asset minus total liabilities, you have to adjust the total asset and total liability. If there is a property, plant and equipment, preferably take its replacement value. If not available, realizable value. Intangible asset, calculate the market value of intangible assets. Put the intangible asset at market value. Receivables, how much you will receive. So less any doubtful debt. Inventory के लिए, always take inventory at NR, whether it is greater, whether it is lower. Always take inventory at NR.
liabilities at redemption value, net asset method. P ratio method, EPS of target company into price earning ratio of proxy or industry average. Market value. If EPS is not available, take the total profit of the target company into PE ratio, that will be the total profit. If EPS is not available, if current EPS is not available, use forecast earning. That will also be equal to market value. Forecast earning कहते हैं next year की earning. Into PE ratio of proxy company. Market value. If target company is a private company, then downward adjust the answer. कितना downward वो depend करता है, क्वेश्चन में बताया होगा कितना downward करना है, otherwise answer should be lower. And if target company has a higher growth prospects, then upward adjust the answer. तो आपने आंसर को upward adjust कर देना. Last है जी cash flow based method. It is not part of syllabus, but in BVP and Kaplan few questions are given. So actually है क्या? Cash flow based method, market value is equal to present value of future cash flow. So if future cash flows are given, cash flows, and let's say perpetuity cash flows are given, discount all these cash flows, present value of all cash flows will be equal to the market value. Few basic points. एक concept होता है synergy. Synergy is equal to combined market value. Combined market value is post acquisition market value minus खरीदने वाले की वैल्यू, acquired value minus target value. These are pre-acquisition value. मैंने आपकी कंपनी को एक्वायर करना है. आई एम द एक्वायरर. माय कंपनी वैल्यू इज 100 million. Target company value is 50 million. But when we combine together, when we join together, when we run our company jointly, our combined market value turns to be 180 million. So the difference 30 million is the synergy. Synergy is the benefit which you can earn when you acquire the other company. 2 plus 2 is equal to 3. 2 plus 2 is equal to 5. इसको synergy कहते हैं. Combined market value minus acquired value minus target value is equal to synergy. By the way, it is not part of syllabus. लेकिन कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो इसलिए मैं बता रहा हूं. So what is the maximum premium you will pay to acquire other company? Premium pay to acquire other company. वैसे other company की वैल्यू है 50 million. टारगेट कहते हैं जिसको एक्वायर करना है. टारगेट इज द कंपनी टू होम यू आर एक्वायर.
to whom you want to acquire. 50 million टारगेट की वैल्यू है, बट वो बेच नहीं रहा. Target is not willing to sell at 50 million. How much more you can pay? 30 million more you can pay. It is a maximum premium which you can pay to the other company. ठीक है. Synergy क्या है? Combined value minus individual values. Synergy is the maximum benefit. Premium क्या है? Maximum premium क्या है? Is the synergy. यही है जो आप maximum दूसरे को दे सकते हैं. Okay. That's business valuation. Any question, guys? Dividend recently paid 0.1 per share. Dividend cover 4 times. Dividend cover. Dividend cover is DPS over EPS. ठीक है. Dividend cover is DPS over. Dividend cover is EPS over DPS. P ratio 5 times. Growth is 8%. Cost of equity calculate करनी है. We need to calculate cost of equity. Dividend is given. Growth is given. Market value is missing. ठीक है. Market value is missing. So we have a P ratio. अगर EPS निकल आया तो EPS को P ratio से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. P ratio is 5 times. We need to calculate the EPS. Dividend cover is given. Dividend cover is 4. Dividend is 0.1. So calculate the EPS. क्या आती है EPS? .4. EPS will be 0.4, right? So market value will be 2 plus 0.08. So what will be the cost of equity? Please calculate the cost of equity. $13.4. $13.4 is the answer. ओके. सर ये ईपीएस हमारे पास क्या निकली है? 4 आई है. आप 0.4 आइए. 0.4 पता चला कैसे आइए? वो सर हमने डिविडेंड कवर का फॉर्मूला यूज. यस. एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस याद है?
जी सर, वो जो स्ट्रॉन्ग मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग वाला। So please tell me, please guess the answer. क्या होंगे? The efficient market hypothesis refer to the way in which the prices of traded financial securities reflect relevant information. Which two of the following are true for a weak form efficient market? What should be the answer, guys? सर ए और डी होगा शायद। A is correct. Share prices fully and fairly represent a past information. Share prices fully and fairly represent private information is wrong. Share prices follow a random walk. Random walk past information में होती है. A and C are correct. D is market does not provide enough information to make good buy. D is incorrect. A and C is the correct answer. A and C is the answer. Okay. सर ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं, ये कहाँ से करवा रहे हैं? ये एग्जामिनर रिपोर्ट्स. ठीक है. आपको पता है एग्जामिनर रिपोर्ट आती है. एक मिनट दीजिएगा. So let's solve another example. Okay, Bilbo Company is an unlisted company with 800,000 shares. Seema is one of the founder and owns 20% of the share. Company has just paid its annual dividend of $0.3. It is expected that next year dividend will be 0.32. After that, it is expected that dividend will grow indefinitely at 2% per year. Share expect a 12% return from the investment using dividend valuation, calculate the market value of the Seema shareholder. So, what is the dividend of year one? बताएं? What is the dividend of year one? 0.32. 0.32. Even as a And from year two onwards, this will increase with a growth of 2% for the foreseeable future. और इन दोनों को डिस्काउंट कर लें किसके ऊपर? 12%. प्लीज कैलकुलेट करें व्हाट इज द मार्केट वैल्यू पर शेयर और उसको फिर 800,000 से मल्टीप्लाई भी कर दें. प्लीज कैलकुलेट.
What should be the answer? टू 233। ये क्या आता है? ये डिवाइड करें 0.32 को 1.12.1 से। पॉइंट 2857 ना। सेकेंड वन इज 2.914 आएगा सेकंड में। दिस वन विल बी 2839760। फिर सीमास की शेयर होल्डिंग ले ले। 567,000 आ रहा है। कुछ गड़बड़ आ रही है, चेक करें कहाँ गड़बड़ आ रही है। पॉइंट 32 इंटू 1.02। Okay, we have to discount it further, no? Plus 0.2857. 3.2, approximately 3.2. 3.2 into 800,000 into 20%. आप करें 512,000 आ। 512, भाई आपका तो आप तो मैथ ही नहीं सही कर रहे, क्या हो गया आपको? 512,000 आ रहा है। सर ठीक हो गया, मेरा पहले यही आंसर आ रहा था, मुझे लगा गलत कर रहा हूँ। माशाल्लाह, क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक्सीलेंट। अंग्रेजी समझ आ रही है, ये बता दें बस मुझे। अंग्रेजी समझ आ रही है? ये तो हाँ बोल दो। अच्छा चलो। इट इज एक्सपेक्टेड दैट नेक्स्ट ईयर डिविडेंड विल बी 0.32। 0.32 आ गया। ओके, ईयर वन पे 0.32 आ गया, अगले साल का डिविडेंड है। After that, it is expected that dividend will grow indefinitely at 2%. Year 2 onwards, you will get a perpetuity growth. So last dividend into 1.02 divided by 0.12 minus 0.02. Discounted with year 1 discount factor, discounted with year 1 discount factor. Market value nikalo. That market value into 800,000, उसके 8 लाख शेयर्स हैं। सीमा होल्डिंग इज 20%, उसका फिर 20% ले लिया, ठीक है 20%। करें जरा प्लीज सॉल्व इट।
ओके परफेक्ट हो गया. Let's move further. सही, जो ऊपर वाला थ्योरी का जो क्वेश्चन था इसमें रैंडम वॉक का जो लिखा उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे. Random walk होती है whenever there is a new news, share prices will move according to that news. If there is a positive news, share prices will move up. If there is a negative news, share prices will move downward. ठीक हो गया सर. वो सिग्नलिंग इफेक्ट इसको कहते हैं. नहीं, सिग्नल इफेक्ट नहीं है ये. रैंडम वॉक होती है. वैसे कहते हैं हर every share has some basic value that is called intrinsic value. But if there is a positive news, share prices will move up. If there is a negative news, share prices will move down. वैसे हर शेयर की एक बेसिक वैल्यू होती है. अगर न्यूज अच्छी आएगी, शेयर प्राइस विल मूव अप. if news is bad, share price will move down. Okay, the company has announced that it will pay an annual dividend equal to 55% of its earning. Earning per share is 0.8. It has 10 million shares. The return on equity is 20%. Current cumulative dividend share price is 4.6. So if EPS is 0.8, what is the dividend DPS? What is the dividend per share? 55% of earning. Please calculate करें what will be the dividend per share? What will be the dividend per share? 0.44. 0.44. So growth will be equal to B into R. R is 20% return on equity. B कितना है? Retention ratio. If company is paying 55% dividend, तो retention कितनी होगी? 45%. So calculate the growth. %9. 9 नहीं आती. Cost of equity calculate करें. 0.44 into 1.09 divided by market value. 4.6 minus 0.44. Cumulative है ना? Plus 0.09. Please calculate the cost of equity. Please calculate the cost of equity. 11.52. नहीं 11.53. ये माइक बंद कर लें प्लीज. 20.52 B option. 20.52 ठीक है. 20.5 B option. B is the answer. B is the answer. Any question, guys? Still now. Do you have any question?
सही है, डीपीएस का बता देंगे। क्या बताना है मुझे? अच्छा ठीक है, हो गया, ओके। It is cumulative dividend market value. We should always use X market value. जी guys, any question जो आप पूछना चाह रहे हैं बता दें। एक वैसे क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट भेज रहा हूँ, वो आपने करना है। कुछ क्वेश्चन खुद भी करना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे हमने कम डिव इसलिए यूज किया कि हम मार्केट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्स डिव नहीं यूज की। हमने एक्स ही यूज किया है, 4.6 माइनस 0.44 किया है मैंने, देखो नीचे। ठीक। जी आप में से किसी ने, आपने क्वेश्चन पूछने थे, प्लीज पूछ लें। What is the cost of equity of security X? मैं X का करा रहा हूँ, वाई आप खुद ही कर लेंगे। रिस्क रेट इज 6%, plus beta is 1.6 into RM minus RF, right? यही होता है कॉस्ट, वो रिक्वायर्ड रिटर्न। सिक्योरिटी जी जो है ना, वो करेक्टली प्राइस है। करेक्टली प्राइस कब होता है कोई शेयर? जब उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी और उसका रिक्वायर्ड रिटर्न मार्केट में वो सेम होते हैं। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिक्वायर्ड रिटर्न सेम हो तो वो शेयर करेक्टली प्राइस होता है, ये कहा था। तो इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 13.2% है सिक्योरिटी जी का। तो रिस्क रेट कितना है? 6% है। इसका बीटा 1.2 है। तो इसका आरएम निकालें, क्या आता है? आरएम क्या आता है चेक करें, रिवर्स कैलकुलेशन करें, आरएम निकालें। आरएम निकालें। मसला ये है कि कैलकुलेटर मेरे पास भी नहीं है। क्या आता है आरएम? 12% है। 12% आता है आरएम। तो आरएम अगर 12% है तो सिक्योरिटी एक्स की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लो। कितनी आती है सिक्योरिटी एक्स की कॉस्ट ऑफ इक्विटी? प्लीज कैलकुलेट करें। 15.6%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है एक्स की 16%, उसका रिटर्न है 13%। यू आर डिमांडिंग 15.6%, but the actual return of that stock is 13%. So whenever cost of equity is greater than required return, cost of equity is greater than the return, that means that stock is overpriced. Overpriced stock है, वो कमा के इतना नहीं दे रहा जितना तुम मांग रहे हो, महंगा है स्टॉक, ओवरप्राइस्ड।
इसको ओवर प्राइस कहते हैं, और वाइस वर्सा इसका अंडर प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसका वाइस वर्सा अंडर प्राइस आ जाएगा। सही है। ओवर प्राइस अंडर प्राइस का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि हमारी जो हम डिमांड कर रहे हैं उससे ज्यादा इसकी प्राइस हुई है। हाँ, मतलब जितना इसने हमें कमा के देना है, कमा के इसने हमें कम देना है, बट इट इज एक्सपेंसिव इन द मार्केट। हम रिटर्न इससे कम कमाएंगे जितना हम डिमांड कर रहे हैं उससे, तो फायदा नहीं है शेयर खरीदने का। ओवर प्राइस क्या है। ठीक है सर। सर और अगर कॉस्ट दो इक्विटी से पेजेस कम हो आगे तो अंडर प्राइस है। ठीक है, पेज 50 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी। Which project should be accepted? क्या क्या कंफ्यूजन है बताएं। सर इसमें कंफ्यूजन ये है कि जो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में E+A, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जो मैं निकालती हूँ तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा आती है वो D+E की आती है, वो 16,500 है। लेकिन जो उसने वो E किया हुआ है और वो 13,900 है। आपका क्या आ रहा है, D+E आ रहा है? D+E। D+E में पैसे कितने लग रहे हैं? सर पहले तो मैंने इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला, फिर मैंने उसको रैंकिंग की है। नहीं 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 नहीं, ये तो वो कह रहा है कि from the list below select which project should be selected based on the circumstances described। circumstances क्या वैसे? ना डिविजिबल, डिविजिबल नहीं है ना, तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से तो करना ही नहीं है, आपने तो कॉम्बिनेशन बनाना है। और डीई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता क्योंकि 10 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट है, अमाउंट इज ग्रेटर देन 10 मिलियन, तो डीई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। सर ये करवा दें प्लीज। बेटा डिविजिबल नहीं है तो क्या बनाएगी, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जी। तो कॉम्बिनेशन कितनी अमाउंट का बनना चाहिए? जितना प्रोजेक्ट है अवेलेबल फंड्स ट्रांसफर। तो आप डी और ई तो बना ही नहीं ना सकते, डी और ई का टोटल करो 5200 प्लस 5600, 10,000 से ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए डी तो है ही नहीं, और बाकी कॉम्बिनेशन बताएं और किसमें मसला है। तो ई और ए होगा। ए और डी देखो जरा, ए और डी 3200 है, ए और डी बन सकता है, ए और ई भी बन सकता है, और खाली ई नहीं बनेगा क्योंकि ए आ सकता है उसमें। तो आंसर या ए होगा या बी होगा आंसर। क्या आंसर इसमें से जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी? सर E+A। हाँ, तो ई प्लस ए आ सकता है ना, 3200 प्लस 5600, 8.8 मिलियन आ जाएगा ना, ये तो हो सकता है। आप डी और ई कह रहे हैं ना, आपने शायद देखा नहीं, 10 मिलियन की लिमिट है। ठीक है सर। और सर इसमें पार्ट ई। पार्ट ई। जी। Okay, a sixth project F is causing considerable confusion, particularly among those number of board of Easter company whose sole means of appraising project is to find an IRR using the spreadsheet function on their computer. Summarize cash flows दिए में जी 0 पे इतने 1 पे और 2 पे. The spreadsheet function requires you to enter the cash flow of a project and also enter a guess for the IRR. Directors are struggling to guess the IRR for this sixth project. वो देखो ना, वो है नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, नेगेटिव, पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव,
तो इसका आईआरआर के किस में आएगा? एक आईआरआर नहीं होगा, दो होंगे। सर दो कैसे होंगे? मल्टीपल वो है ना, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज है नॉन कन्वेंशनल है। इस वजह से। सर अगर हम इसको एक्सेल में फाइंड करते हैं आईआरआर नहीं के थ्रू, आएगा, एक्सेल में नहीं आएगा, एक्सेल में एक ही आएगा। उसमें तो एक आएगा ना। हम्म, ठीक है। और जी एनी अदर क्वेश्चन? सर ये क्लियर नहीं हुआ। आई मीन क्या कि क्लियर नहीं हुआ? कौन से वाला क्लियर नहीं हुआ ये बताओ? सर यही कॉन्सेप्ट कि अगर एक्सेल में हम फॉर्मूला के थ्रू करते हैं तो एक ही आईआरआर आएगा ना हमारे पास तो। बेटा हमारा जो एक्सेल है ना वो लिमिटेड फंक्शन वाला है ना, इसलिए एक आएगा। ओके, और वरना फिर एक्सेल हमारे पास नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज हैं तो दो आईआरआर्स आएंगे। नॉन कन्वेंशनल में आने ही दो, ये ठीक है याद रख लो। सर, द लास्ट वन 10th का पार्ट है। यही नेक्स्ट वाला है ना। जी। Company is considering a new project. Company currently install alarm, putting contact points on access point. Okay, ठीक है जी। Contribution इतना है, allocated overheads इतने हैं जी। Allocated overheads नहीं आने ना। Not tax level is available for loose equity finance cost equity 12%. बस 12% पे डिस्काउंट कर दें इसको। Allocated overheads नहीं लेने आपने, सिंपल है ये तो। ये ईयर जीरो में आ गया 6,000 नेगेटिव, कंट्रीब्यूशन आ गया हर साल 25 25 25 25। एलोकेटेड ओवरहेड्स यू विल इग्नोर इट, एलोकेटेड ओवरहेड्स इररिलेवेंट होते हैं। और टैक्स आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा 25,000 के ऊपर दोबारा से। नेट कैश फ्लोस फाइंड करेंगे, एनपीवी फाइंड कर लें, बस हो जाएगा सॉल्व। सर टैक्स ऑन कंट्रीब्यूशन किस तरह से आएगा? 25,000 इंटू 25%। ठीक है। सर पेज 57 पे है क्वेश्चन नंबर 107। पेज सॉरी सर ये एक दफा खुद बता दें सॉल्व। ये बड़ा आसान है, देखो यहाँ मैं कर देता हूँ। जीरो पे 6,000 कितने ईयर्स हैं? 5 4। 1 to 4 यस। इसी को मैं ऑटोडेस्क कर लेता हूँ यहीं पर ही। 25% टैक्स लेना ना, इंटू 0.75 कर देता हूँ। और क्या है इसके अलावा? 12% पे डिस्काउंट कर लें। मेरा आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा वैसे। ये आ जाएगा 50,950। सेकंड कंट्रीब्यूशन है 25% है। नो टैक्स अलाउबल डेप्शन इज अवेलेबल। आना चाहिए तो 51 तो होना चाहिए। एक सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है ना? जी सर।
वो टैक्स एरियर में है, एक सेकंड रुके, टैक्स एरियर में है, एक सेकंड, वो तो हमने देखा ही नहीं। ओ यस, ये लिखा हुआ है टैक्स एरियर में 1 साल बाद, 2 to 5 है ना, बस ये फर्क है, टैक्स एरियर में है। तो मैं इसको 25,000 ही ले रहा हूँ, और इसका टैक्स 1 साल बाद लेना है 25%। आप कर लें, नेट कैश फ्लो फाइंड करें। अब हो जाएगा, एनपीवी निकाल लें अब इसकी। ट्वेल्व परसेंट, सॉरी यहां से 53,000 आ जाएगा, ठीक है। जी सर ठीक है। दानिश आप कुछ कह रहे थे? सर पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 107 है। पेज नंबर 57 87 57 57, कौन सा क्वेश्चन है? 107 है सर, ये इसको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा theoretically. A company is going to take a project using a mix of equity and debt finance in an economy where the corporate tax is 30%. Assuming perfect market other than tax, which of the following statement is true about the project? Beta equity is greater than beta asset. ठीक है. WACC should be lower than the cost of equity. Calculated using beta asset. WACC is greater than cost of equity. नहीं, WACC तो कम ही होगा। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि बीटा इक्विटी बीटा एसेट से ज्यादा होता है, यू नो दैट राइट? जी, क्या क्योंकि ख्याल? उसमें दोनों रिस्क होते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब आंसर या तो ए है या सी है, बी और डी तो आंसर हो नहीं सकते। ये बात क्लियर होगी? आगे चलूं? और वैक कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, ये भी आपको पता है, क्योंकि वैक वेटेड एवरेज है डेट और इक्विटी। आइडिया है ना, ये वैक कम होता है, ये केडी है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वैक कम होता है। तो आंसर क्या है इसका? ए आंसर है। बताएं क्या आंसर होगा? 180। क्या क्वेश्चन था? 107 ना? सर यही है आंसर। हाँ, वही वैक कम होगा ना, बस दोनों दोनों देख। सही है, अब इजाजत है या नहीं? जी सर, कोई और हुए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। ये एक और क्वेश्चन आया जी, बताएं प्लीज। सर अभी काफी क्वेश्चंस हैं बट अभी होंगे नहीं, तो आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम कब दे रहे हैं? अभी आपने मुझे कहा था सर लास्ट क्वेश्चन है। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कवर है, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और बिजनेस वैल्यूएशंस में है। तो कितने क्वेश्चन है वो? दीज आर टोटल 12। ओके,
तो नेक्स्ट क्लास हमारी कब है अनाउंस? सर सेकंड